happening between universities in Germany, and that is something you'll find through different scientific journals. Of course, a lot of, as a layman, it will be difficult for us to connect them. So it is very important to see who is research. Of course, through different institutional and departmental web profiles. So all the German universities are very, I would say, are still in German, if I'm not wrong, but many are also in English, and they are changing Google translations these days, so should not be a hamper. Through alumni, not necessarily DAD alumni, very good source of connecting, because they already have, if one, as Katya mentioned you, it's always a trust is built, so that works wonderfully. Shops, seminars, program like this, of course, that's also a very good start. In touch with, we organize online, offline points to initiatives like Gerrit and German universities, research institutions, the area of specialization. This is a paper we came with. The German guidelines. So you can compare what are the requirements on the German side and the Indian side. So it's a very structural paper for international offices and for leadership. You find endless tables for bachelor, master's, and on very important on the online version, not in the print version. You find 10 sample contracts. So we collected some contracts, some templates. So that could help in formulating MOUs, contracts, templates, so that you don't need to start from the scratch. And a brief overview on the German higher education system for you, and a brief overview on the Indian higher education system, which is very difficult to do. And what are the fields they are working on? Who are the PIs of them? So also this is a very good point to get to know what is already happening. And if you find any interesting partners there, you can contact. It's the first step, first door where the funding starts at all the levels. Objectives, outcomes, what else is part of an application? You have to describe your partner. What else is part of an application? Monitoring the ICE, we talk about this tomorrow, exactly. But the funding. Novelty. outcome of the process. Outcome, novelty. With regard to a typical, so the proposal has to be 20 students are going from India to Germany. Make sure also 20, if not 20, at least 10 students also come here. Yeah. Relevance of the project. What is the relevance? So we talk about a lot of SDGs these days, and it's hitting any hobbies. So you have your project, and then you have to look for the funding. One needs 2 or 3 meetings with the German side and sit and make it jointly. Even just by DA. So formally the Germany university is the applicant, but of course he cannot do that all alone with the Indian side and the objectives and all. Very important aspect also. So what kind of a funding you are reporting, a funding of 400, 500,000 euros. So you need to submit your yearly budget for that. Every year how much? You receive 400,000 euro 4 years and then you can do what you want. No. If you don't manage to do in the first year, it was during COVID a huge struggle for the universities, no? Because they could not. One has to carefully plan a bit what is possible. A lot of discussion, we decided that we go with the Indian financial year because we could not find common ground. The project should have started 1st of April, but bear that in mind. So what happens for the Germans at the end of the year, everybody are gone. When you're super hectic in October, November. We are here for a workshop on internationalization and cooperation. It's a workshop dedicated for international officers at Indian higher education institutions. We are very glad that the Agriculture University is hosting the workshops. The scope of the workshop is to enable Indian universities to cooperate with Germany and provide perfect applications so that we see a lot of funding coming into the universities and to see an increased cooperation between India and Germany. For the Indian students, it's going to be beneficial if one project goes through. There will be plenty of opportunities if the institution is successful with the application to bring Indian students to Germany, but there's also the opportunities then to bring German students to the Indian campus so that they can interact and get also an intercultural experience here in Kashmir. So for those students who are not able to leave, there's going to be a kind of internationalization for home available. It is a comprehensive organization. We are not a specific university. We are enable and we fund.
and our programs in general are open for all subject fields. Look into Germany as a destination. Germany is a good place for studying. We offer good education at a very fair price, and definitely in the field of agriculture, because we are here the Agriculture University. Germany is one of the leading one of the leading countries in that field. So look left and right hand side and take Germany and Europe as one of your opportunities. मेरा नाम शिखा सिन्हा है और मैं DAD नई दिल्ली ऑफिस में काम कर रही हूँ। ये वर्कशॉप्स हमने पिछले 3-4 सालों से शुरू की है। मोर कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हम लोग इंटरनेशनल ऑफिसेज जो अलग अलग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, वहाँ के लोगों को इनवाइट करते हैं और ये हमारा बहुत इंटरैक्टिव वर्कशॉप रहती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ऑफिसेज के बारे में बात करते हैं। इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में हम लोग प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे एक अच्छी एप्लीकेशन फंडिंग के लिए लिखी जाती है, कैसे शुरुआत की जाती है। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बहुत सारे आइडियाज़ इसमें निकल के आते हैं। तो ये हम लोग डेढ़ दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं और पिछले 3-4 साल में हम कम से कम 4 या 5 वर्कशॉप्स कर चुके हैं भारत के अलग अलग शहरों में। मैं डॉक्टर रेहाना हबीब हूँ, डायरेक्टर एक्सटेंशन हूँ यहाँ आज स्कॉस्ट कश्मीर में। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से और जो हमारा इंटरनेशनल सेल है उनकी ओर से एक वर्कशॉप हो गया जिसका नाम है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कॉपरेशन मैनेजमेंट। ये हमारा जो जर्मनी के साथ जो एक आपको पता ही है DAAD एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको फंड करते हैं, उधर उनकी एडमिशन्स करते हैं और क्या कोलैबोरेशंस हो सकती है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उसके बारे में आज प्रोग्राम हुआ। इन्होंने पूरा हमें बता दिया कि कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी यूनिवर्सिटी है इनकी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस हो, या वहाँ की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ और इंडिया की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का आपस में कोलैबोरेशन हो। और इसमें ऑल्दो कि ये डीन्स और डायरेक्टर्स के लिए प्रोग्राम था या इंटरनेशनल सेल के लिए, पर हमने इसमें वाइस चांसलर साहब ने स्टूडेंट्स को बुलाया भी था क्योंकि उनको भी आज बहुत कुछ पता चला कि कौन सी उनकी असली वेबसाइट्स हैं जहाँ इनको अप्लाई करना है, कैसे टाइमलाइंस को फॉलो करना है, कैसे एप्लीकेशंस को भरना है इंडिविजुअली भी और एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत फेक वेबसाइट्स होती हैं, बहुत फेक एडमिशन्स होते हैं, बहुत फेक एजेंट्स होते हैं। तो आज इनका 1-to-1 विद स्टूडेंट्स भी रहा, इंडिविजुअल्स रहा, विद HODs रहा और इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि कौन सी वेबसाइट्स इनकी हैं और कहाँ से फंडिंग मिल सकती है, कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें कौन सा फंड मिल सकता है, किस चीज़ में ये हेल्प कर सकते हैं और कहाँ पे फंडिंग नहीं है मगर कहाँ पे कैसे BSc या बैचलर्स या मास्टर्स या PhDs में कैसे एडमिशन लेना है और क्या मतलब उनको फॉर्म्स में उनके CVs में क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, क्या कैसे अट्रैक्ट होना चाहिए उनका CV, या कैसी उनकी जो एप्लीकेशन है या जो ईमेल्स करेंगे प्रोफेसर्स को वो कैसे अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि उनका एडमिशन हो जाए। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसके लिए यहाँ पर हमने एक इंटरनेशनल एजुकेशन सेल क्रिएट की है और ये जो DAAD है ये एक जर्मन सर्विस है जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जर्मन में करती है। तो वो हमेशा यहाँ इंडिया में वर्कशॉप करते हैं और ये हम फॉर्चुनेट है, ये यूनिवर्सिटी फॉर्चुनेट है कि इस बार उन्होंने SKUAST कश्मीर को चुना है एक सेंटर और हमें भी मौका मिला कि हम भी इनके साथ इंटरेक्ट करें।